amount of 3,000 rupees. We are teaching the students and we are marking them able to get fluent on the speaking English language. And for that reason, we have started because the basic purpose of my teaching is in that I do never try to get material benefit from the side of the students, and this is the reason for which I'm working here. And I hope that by working, my teaching serve the purposes of my students, and I'll be successful in my goal. That's all. No. And when I would like to share here another story. When I started giving lectures on my YouTube channel, English Grammar and Use, at that time, few persons commented below into the descriptions that say that you are talking the language slowly. So this is not a fluency. I want to give them the answer that whenever your purpose is to teach the students to learn things and make these things understandable to the students, it doesn't mean you need to talk fast. Whenever you are sharing your ideas with your students, with your learners, it means that you make the things understandable, not just talk fast. Because you talk fast, they all never understand. Then after the purpose of your teaching is in serve. So this is the purpose for which I'm talking slowly, so that my my accent and my pronunciations can be understood by the learners, by the viewers, by the students, and rest of the people who they are interested to watch my videos, because we are here live on our channel where I'm serving. Let's start today with the topic. As usual, because at the store I all the time share few stories with the learning, with the teaching that could make the students able to understand that how to learn the language and how to get oneself fluent in at the language. And then after and at the end of my video, I share some sentences on which I ask some questions and I try to give the answers of those questions. And yesterday, a day before today, I promised to the students that I'll teach them about rest of the sentences, about all four ideas that we really promise the students. And today I'll share all these things. Okay, let's come on. Now, what else? I said that doubts are sometimes hinders the learners to get fluent. You know that whenever we are doubtful about something, so we are not getting confident enough about that thing. When we are not having ourselves clear at the things, then it's become hard for us to make another person clear about that one. That's the case even with all the jobs and activities we are doing here. So you know that yesterday I also referred a proverb in English language. I said that throw a wrench into the works. It means that something is working smoothly and something is working well and something is making progress, but all of a sudden we threw a wrench. I already yesterday draw a pic of that, and today I'll second time make a pic of that. That type of thing is there, yeah. That type of thing. So what do you call that? I call that wrench.
and another English word for that is spinner, and many more words like that can be used. And I said that as something is working well, but all of a sudden we threw that into the work that's working, so it can stops that thing from working. It can create a blockage to the things that keeps on growing. Okay, so like that, if we are doubtful, I want to give here an example of a businessman, that whenever you are going to start a business, so you start a business, there are many more opinions at your brain are striking again and again, and your thinking isn't clear that what way should I start this business. So you are afraid of starting your business because you are doubtful. Why are you doubtful? You are saying that you are thinking to yourself, you are talking to yourself, and you are saying and you are asking many questions from yourself at the time. You are saying that either I start this business, I'll it give benefit to me or not. That's the reason. That's so many questions arise at that time, and we ask such questions from ourselves when, until and unless we do not make ourselves clear about that thing, we never start that thing. So this is the reason with the language also. So the doubts are available there. I said that whenever we start learning a language, we have the three states on which we are learning the language. And sometimes I'll refer these stories later on, but here I want to say again and again that the exposure, one thing is that one stage is that first stage, and second stage is the awareness that we got about the words and the grammar and about certain other things. Second stage is that, and the third stage that we get an ownership over the language. Ownership. These are the three states. Our language revolves around these three states. But when we talk these three states, and I all the time refer to the two things when I want to teach the students that how to get themselves fluent at the language. What are these things? I say that the situation plays a very important role on getting oneself fluent and getting oneself good at the language. What is the situation? Because on the situation, from the situation we understand that which one word is suitable and which one word is correct to use here. Okay, so this situational understanding comes when you get ownership over the language. But you know that all the students, some students keep asking questions and from me, putting comments below to the descriptions when I upload my videos on my YouTube channel. You know that what questions they ask me. They ask, sir, and we understand the things well, we have a lot of vocab, and we are good at the grammar, and still we are not able to talk English language, still we are not able to speak fluently. So what is the reason? The reason is that they haven't got ownership over the language. What I always talk, that whenever you want to make yourself able to talk English language well or any other language, you need to get ownership over the language. This is the problem that stops you. This is the place where we are stuck. Where we are stuck. This is the place where we are stuck. Now, for example, I here would like to give some examples to you, because I believe and I trust in giving more examples rather than teach the students the definitions and the translations. These are also the problems I already discussed in my earlier live videos and my live lectures and many more things, discussions I gave earlier at the start of my coaching center. You know, so I said that you are exposed. For example, if you are passing from here and you hear the word for the first time, you hear the word talk.
Oh, people are talking like that. Anybody you hear for the first time, it means that word comes to your ear. You are not going to the word, but word itself comes to you. That means that even now we are here and the classroom. A sound comes from outside. We hear that sound. That means that that sound for the first time exposed to us, and we do not know that what does it mean, but later on we try to consult with the dictionary and with many more sources. For the first time we come to know about its meaning. We come to know about its meaning. Oh, talk, it means that whisper a few words or something like that. You can say, you hear the word speak. So you say, oh, that means that to utter few words, to convey your idea, something else. Like that, you hear the word speak. Or another word that I could give here as that a run. For example, you are sitting here and you are exposed to word run. Now, you say that the run is a word that can be used for a physical movement, from fast physical or a quick physical movement from one place to another. Like that, the running. That's so. These words are exposed to you, but at that time you don't know that what does they mean. What do they mean? But later on, you consult with a dictionary and some meanings you get out of the dictionaries, but still you are not clear about that. So it means that few meanings of word run you get from the dictionary or from the books, but you are not making a deep study over that word and you are not getting a complete understanding about that word. It means that you have got somewhat understanding about the word, but not the complete one. So at the time of using that word and your own thoughts and in your own idea, it creates a problem for you here. You struggle here. You listen, you are exposed to the word and you get somewhat awareness about the word. You understand the word somewhat, but at the time of using that word, it creates trouble for you, and there you struggle. Are you whenever you are trying to use that word, there are many doubts come in your brain. Oh, am I using that word right? Am I using that word correct? So these doubts stops you getting fluent. These doubts. So if you get a full understanding about the verb run, yeah, as earlier I gave the examples of that word, I said that if you get a full understanding about even a small word run, you know that run means to make a physical movement, and run means to have a business, run means to flow. There are so many meanings of even one word run. Whenever we get all these meanings in our brain about the word run, then our doubts are eliminated from our brain. When your doubts are eliminated from your brain, you are able to talk English language or any other language fluently because you are clear. You are clear. Even in the business, whenever you are taught that this business, I'll give you that benefit and that can, if you do this way, that benefit can be gotten. But if you do it another way, it can give you a loss. So whenever you come to know, you get complete understanding about the business, you all start confidently because there will be no doubt. Whenever there will be no doubt in your mind about the business, you will start it fluently, smoothly. So that's the reason when students are struggling. This is the reason. So I say that one should get ownership over the language. When even I'm a teacher of English language, even I have done MA in English, but still there are many words that I don't know that what exactly their meaning is.
I do not know that there are many words in English language. Even the native speakers do not know the exact meaning of many words, but still they manage to talk language fluently. Because even fluency doesn't come with the memorization of all words. No, it comes with getting ownership over the few words. Whenever you learn few words, it means, for example, you learn 100 words, but you got complete understanding about these words, then you can make the use of these words on your own sentences, and you can manage your thoughts with these words. So this is the understanding. So I suggest and advise to those learners who they are still to the dictionaries for getting more and more words memorized. That will never solve their problem if they really want to get fluent. You know that when you get fluency, you want to get fluency on your speaking, you learn even a small portion of the words, but still you learn it completely. Whenever you get a complete understanding about even a small amount of word, then you are fluent. Fluency doesn't come with the memorization of the words, but rather it comes with the complete understanding of few words. So like that, and many more people are thinking that there is no use of a grammar, that the grammar cannot be used. Grammar can be used, but situational use of grammar is necessary there. For example, whenever we are talking about the present, we are talking about the activities that and the events that are in present. If we make the use of past tense, it will create doubts in the understanding of the people who we are going to talk. So these are the issues that should be addressed. Whenever you are going to teach the students, you address these problems, because these are the basic problems that create doubts in the mind of the students. Because when you are going to teach the students, you make these doubts removed from the mind of the students so that they can talk the language fluently. This is the reason. So, I said that through a wrench into the works, it means that something is working and you are on the button of a fan and fan starts moving. Okay, but all of a sudden you threw a bolt into the fan. It will create problems for the running of the fan. It will create, or you threw a stick on the fan, it may create problems on the run of the fan. So these are the problems. As yesterday I also said, for example, if we are here talking as a group of people, we are here talking, and all of a sudden a person comes from outside and he is posing a different question to us that's out of our understanding, and we never have thought about that and never heard that word. So that can create a problem for us. So you know that you need to understand about the situational usage of words, and even the grammar, that which words are useful in this situation, and we do not know that what question that person are bringing together with himself and what question he can pose to us. So we keep ourselves prepared about the questions that the people are going to ask from us all the time. So like that, we be prepared for all the questions that they carry with themselves, and we are bound to give them answers of all these questions. And if we understand their questions well, then we can give the answers well. If you do not understand, even in Brahmi language, even in Sindhi language, even in Baloti language, whatever the language, until and unless you do not understand that language fully, you cannot get fluent with that language. That's the problem with English language. Okay, let's start. So, we got many words. I mean, you know that uneducated people are there, and they are making the use of few English words.
whenever they talk their own native language, they make the use of English language words, but still they do not know that what they exactly mean. No, they are not bound with the meaning, but they rather make the use of these words and they are getting. So like that, I said that exposure comes to you and awareness. How do we get ownership over the language? It can come to you by having a good teacher who knows the English language well. Any language you are learning, you go to a teacher who knows the language well. If he understands, he knows the language well, he is good at the language, he can teach you well about the language, that how to make the use of these words. But if a teacher doesn't know himself, he doesn't know that what is he going to teach, then there is a problem. Not for the students, but for himself, that the teacher is teaching. These are the problems. So ownership comes when you attend different channels, YouTubes, and many more sources that are relevant with the language. You can get ownership over the words. But the ownership can be gotten when you attach yourself with a good teacher who knows who is good at the language. That's the problem. That is the problem here in our country. Because in our country is the problem that many teachers are appointed, even at the private schools, they do not know what subject they are going to teach the students, and they are not themselves clear about that, and they are keep on teaching the things. That's the problem. So, let's come. As I said it earlier, that at the end of my video, I'll try to teach about the different ideas that we make use of these ideas and are speaking. Okay, what are these ideas? So whenever you are let's start. Come in our Sindhi language, I'm going to tell you the story. So जॾहिं तव्हांखे को कारोबार करणो हूंदो आहे, तव्हां जॾहिं को कारोबार शुरू कंदा आहियो, उन कारोबार जे बारे में जेकॾहिं तव्हांखे शक शुबात हूंदा ऐं तव्हांजो खोड़ सारियूं मिसअंडरस्टैंडिंग हूंदियूं त बाबा हीउ कारोबार मां शुरू कंदुसि, हीउ कारोबार अलाए कीअं हलंदो, हिन कारोबार में मूंखे कहिड़ो तरह सां पेश अचणो पवंदो, ऐं मां हीउ कारोबार भला कीअं स्टार्ट कयां, हिन कारोबार में केतिरो नुक़सानु थी सघे थो, केतिरो फ़ाइदो थी सघे थो, पर जेकॾहिं फ़ाइदो थींदो त कहिड़े नमूने सां थींदो ऐं कहिड़े नमूने सां कोन थींदो, त उन में ॾिसो तव्हां डाउट्स में वरितल हूंदो, तव्हांजे दिमाग़ में खोड़ सारा शक शुबात हूंदा, तव्हां को कारोबार शुरू न करे सघंदव। छो तव्हां दिमाग़ में फियर्स हूंदा, डक हूंदा, यार मां हीउ कारोबार शुरू त कयां पर फ़ाइदो थिए या नुक़सानु थिए, मूंखे त का ख़बर कान्हे। त ॾिसो जेसिताईं तव्हांखे उन कारोबार जे बारे में फुल अंडरस्टैंडिंग न हूंदी, मुकमल मालूमात न हूंदी, तव्हां उहो कारोबार स्टार्ट कोन कोन कंदव। अहिड़े नमूने सां जेकॾहिं पाण का गाॾी हलायूं था, सिर्फ़ु मां मिसाल थो ॾियां, ऐं मिसाल हमेशह सोसाइटी में खणंदो आहियां, उन्हनि मिसालनि खे तव्हांजे साम्हूं पेश कंदुसि ऐं सम्झा थो त उहे ई मिसाल तव्हांखे सम्झण में आसानी फ़राहम कंदा। जीअं मिसाल जे तौरु तव्हां ॾिसो का गाॾी हलाईंदासीं, शुरू था कयूं असीं चऊं बाबा गाॾी हलाईंदासीं या को बि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हलाईंदासीं, इलेक्ट्रॉनिक का मशीन हलाईंदासीं, का बि शइ हलाईंदासीं, जेकॾहिं असांखे उन गाॾी जे बारे में मुकमल ॼाण न हूंदी, मालूमात न हूंदी, त असां गाॾी खे स्टार्ट ई कोन कंदासीं, पर जेकॾहिं स्टार्ट कंदासीं त हुते खाई विझंदासीं या को एक्सीडेंट थी पवंदो। छो डाउट्स हूंदा असांजे ज़हन में। ॾिसो आहिनि सभु शयूं हलाइण ईज़ी। हाणे ॾिसो तव्हां फ़र्ज़ु कयो, ॿियो मिसाल मां तव्हांखे ॾियां, जेकॾहिं तव्हां चए ॾिसो तव्हां को पंखो वठी आया आहियो, तव्हां को नओं पंखो वठी आया आहियो, तव्हां पंहिंजी बेठिन में लॻायो आहे, उन पंखे खे जॾहिं तव्हां चओ था मां हिन बटन सां हिन सां जेकॾहिं ऑन कंदोसां मथां सड़ी वञे, मथां को नुक़सानु थी पवे,
ॾिसो ये डाउट्स जेसिताईं तव्हांजे ज़हन में हूंदा तव्हां पंखो स्टार्ट कोन कंदो भले तव्हां गर्मी में मरी वञो ईअं सही जेकॾहिं तव्हां एसी पंहिंजे कमरे में लॻायो था पर एसी जी तव्हांखे हलाइण जी ख़बर न आहे का अंडरस्टैंडिंग जी तव्हांखे एसी जे बारे में मालूमात ई न आहे कहिड़े बटन ते चालू थींदी आहे कहिड़े ते बंदि थींदी त तव्हां डाउट्स में हूंदो त तव्हां एसी खे चालू ई कोन थींदो चवंदो धूड़ पियो आहे असां भले गर्मी में सही आहियूं अहिड़े नमूने सेंस आहे सर त ॾिसो मां हिकिड़ी तव्हां सां स्टोरी थो शेयर कयां जॾहिं मां वॉशिंग मशीन वठी आयुसि पंहिंजे घर में त वॉशिंग मशीन जी मूंखे का अंडरस्टैंडिंग कान्हे त कपिड़ा धोइण वारी मशीन आहे कहिड़े नमूने सां बंदि थींदी आहे कहिड़े नमूने सां चालू थींदी आहे मूंखे का ख़बर कान्हे हाणे हले पई उहो स्विच बि हलण लॻो पियो आहे सभु शइ लॻी पिया पर मां न बटन पियो फेरायां न उनखे बंदि पियो कयां न का शइ पियो कयां इन्हीअ करे न मूंखे मेनी डाउट्स वर इन माय ब्रेन खोड़ सारा शक शुबात मुझे क्या ज़हन में हुआ बाबा कहिड़े बटन सां बंदि थींदी कहिड़े सां शुरू थींदी ऐं कहिड़ो बटन जेकॾहिं मां ग़लति लॻाए विझो सड़ी वेंदी इहे डाउट्स मूंखे स्टॉप किया कनि मशीन खे ई हलाइण खां त ॾिसो तव्हांखे जेकॾहिं अंग्रेज़ी लैंग्वेज जे बारे में ॾिसो को बि लफ़्ज़ तव्हां रन वर्ड था खणो या प्ले था खणो रन वर्ड था खणो हा ॾिसो असां जॾहिं ॾिसो पाण सां पिया ॻाल्हाईंदा आहियूं न पाण सां त असीं कॉन्फिडेंस में हूंदा आहियूं छो जो असांखे ख़बर आहे कोई चेकर त आहे ई कोन केरु असांखां पुछण वारो आहे ई कोन असां पाण सां ई पिया ॻाल्हायूं दैट्स ऑल at the time we are confident enough at the time उन टाइम त असीं माना पूरे एतमाद हूंदा आहियूं मज़बूत हूंदा आहियूं पर जॾहिं ग्रुप ऑफ पीपल साम्हूं ईंदो आहे माण्हुनि जो हुजूम साम्हूं ईंदो आहे हाणे असीं ॾिसो शक शोभा असांखे डेवलप पकोड़नि शुरू कंदा आहिनि असां चवंदा आहियूं यार हीअ त मां हिते इस्तेमालु कंदो अलाए सही ईंदो अलाए ग़लति हूंदो उहो पढ़ियल लिखियल आहे ऐं मथां मुंहिंजी ग़लती पकिड़े वठे ॾिसो इहे शक शोभा ई असांखे ॻाल्हाइण कोन ॾींदा आहिनि ॻाल्हाइण जी करे कोन हूंदा ॾींदा आहिनि जो असांजी जेका ऑनरशिप ऑफ द लैंग्वेज आहे उहा कान्हे का त आउं चवां थो जंहिंखे बि ॾिसो अंग्रेज़ी या कहिड़ी बि ॿोली सिखणी आहे त सभ खां पहिरियां उहो कोशिशि करे त इहे जेके डाउट्स हुनजे ज़हन में आहिनि उहे ख़तमु करे ॾिसो तव्हांखे जेकॾहिं बाइक ई तव्हांखे ॾिनी वञे त बाबा बाइक तव्हांखे हल्की ॾिसो मां कार हलाए बि वेंदो आहियां मां पंहिंजो मिसाल थो तव्हांखे रेफर कयां त मां गाॾी हलाए वेंदो आहियां कार आसानी सां हलाईंदो ऐं मूंखे सुठी हलाइण अचे थी पर आउं कॾहिं बि बाईपास ते या शहर में न आयो आहियां छो जो मूंखे डाउट्स त बाबा हिन में अची वियासीं मथां लॻी न किथे पए किथे जेको आहे सो धकु न लॻे या पोइ असांखे न धकु लॻे या ॿिए खे न लॻे जेकॾहिं आउं शहर में काए ॾिस त हुते एक्सीडेंट थी पवंदो फलाणो थी वेंदो दीस डाउट्स आर स्टॉपिंग मी ड्राइविंग इन द सिटी आर ड्राइविंग इवन ऑन द बाईपास दीस आर द डाउट्स ॾिसो जॾहिं असांखे डाउट्स हूंदा आहिनि मां यार हीउ फलाणो लफ़्ज़ इस्तेमालु त कयां अलाए सही हूंदो अलाए ग़लति हूंदो अलाए सही हूंदो अलाए ग़लति हूंदो इहो सही ऐं ग़लति जस्ट जेका आहे न उहा मिसअंडरस्टैंडिंग या जेके डाउट्स एलिमिनेट असीं न कंदासीं न त असां ॻाल्हाए कोन सघंदासीं ॻाल्हाए वेंदो इहे डाउट्स ॾिसो हाणे साईं बि माशाल्लाह कोर्स सिखी आयो आहे संभालो अथनि ॾिसो साईं सिखी आयो आहे माशाल्लाह हुते अंग्रेज़ी सिखी आयो आहे साईं टीचर्स जे विच में बहरहाल हाणे साईं ॾिसो अचे थो जॾहिं ॻाल्हाइण जे स्टेज ते अचे थो त साईं जे ज़हन में खोड़ सारा डाउट्स आहिनि त साईं इहो थो सोचे यार मां हीअ जेकर अंग्रेज़ी ॻाल्हाईंदुसि त मथां मुंहिंजी अंग्रेज़ी में के ग़लतियूं हुजनि के मसइला हुजनि त उहे मसइला जेकॾहिं निकिरी आया त मुंहिंजी खिलती वेंदी आहे उहो मसइलो थी वियो मूंसां माण्हू मूंखे जेको आहे सो क्रिटिसाइज़ कंदा वग़ैरह वग़ैरह इहे डाउट्स त ॾिसो डॉक्टर्स ॾे असीं जॾहिं वञूं था न डॉक्टर्स ॾे असीं जॾहिं वञी चुप करे वेही रहूं डॉक्टर खे चऊं का बि शइ असां डॉक्टर खे न ॿुधायूं त बाबा डॉक्टर असांखे दवा कोन ॾींदो जेसीं ताईं डॉक्टर सां उहे सिम्पटम्स ऑफ डिज़ीज़ शेयर न कंदासीं डॉक्टर असांखे का बि दवा कोन ॾींदो ईअं ई तव्हां सम्झो त आउं तव्हांजो अंग्रेज़ी डॉक्टर आहियां ठीकु आहे हाणे तव्हां मूंसां सिम्पटम्स पंहिंजा शेयर कंदो जेके तव्हांजूं ग़लतियूं आहिनि या ॾिसो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आहिनि या जेको आहे सो वर्ड जे यूज़ेज जूं मिस्टेक्स आहिनि या ॿियूं खोड़ सारियूं ग़लतियूं आहिनि उहे जेकॾहिं ग़लतियूं तव्हां खणी ईंदव ज़ाहिर दसी न त आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ फॉल्ट मां सम्झंदुसि त बाबा हिते ग़लती आहे इन ग़लती खे सही करिणो आहे ईअं सर ॾिसो अंडरस्टैंडिंग जॾहिं तव्हांखे कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जंहिं शइ जी अची वञे ऐं ॾिसो खोड़ सारा माण्हू तव्हांखे चवंदा आहिनि
जॾहिं टीचर्स असां बि पढ़ंदा हुआसीं जॾहिं असांखे सम्झाईंदा त बाबा विकेट खे यादि कयो, विकेट खे यादि कयो। बाबा विकेट खे यादि करे कबो छा, उनजो आचार ठाहिबो छा। फर्ज़ कयो मां 2000 वर्ड्स यादि करे छॾिया, टोटल लफ़्ज़ जी मीनिंग्स इन अंग्रेज़नि खे बि कान थी अचे पंहिंजनि जी, उन्हनि जी माना टोटल लफ़्ज़नि जी माना कान थी अचे, नवां लफ़्ज़ अचनि था छो जो लैंग्वेज इज़ इन द डेवलपिंग स्टेज, तरक़ी कंदी थी रहे। त ॾिसो हाणे उन्हनि खे बि काफ़ी सभिनी लफ़्ज़नि जी माना नथी अचे, पता हूंदे बि उहे फ्लुएंट आहिनि स्पीकिंग में। त लफ़्ज़ यादि करण सां फ्लुएंसी कान ईंदी आहे, ग्रामेटिकल रूल्स रटण सां फ्लुएंसी कान ईंदी आहे। ॾिसो न तव्हांखे ट्रेडिशनल ग्रामर में चवनि बाबा नाउन खे यादि करे छॾे, ऐं क्वेश्चन थो पुछां, मुंहिंजा खोड़ सारा क्वेश्चन्स when I start teaching the students, I ask so many questions and from myself and from those who they are learning the language and even from those who are teaching their subjects. ॾिसो खोड़ सारियूं शयूं आहिनि, जीअं त हिकिड़ो क्वेश्चन इहो कयो आहे त बाबा प्रैक्टिस कयो, यार प्रैक्टिस तूं कर, चलो प्रैक्टिस कईसूं बाबा। I'm a teacher, Baba. These words, if you repeat again and again, keep on repeating these words. What else they bring a change in you? Now, there will be no change. का तब्दीली आनी था, प्रैक्टिस सां तब्दीली तो कान ईंदी न। ॾिसो पाण पढ़ूं था त नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थींदा आ गया। जेकॾहिं इहा ॻाल्हि तव्हां पंहिंजे ज़हन में मेमोराइज़ करे छॾियो, यादि करे छॾियो, तव्हां मूंखे ॿुधायो जुमिले जी कहिड़ी जॻह ते कहिड़े जुमिले में कहिड़े थॉट्स खे कहिड़े आइडियाज़ खे तव्हां बयानु करण में डेफिनेशन बयानु था कयो, किथे अचे थी का। कॾहिं तव्हां कंहिं थॉट्स में का एसे में का एप्लीकेशन में या का विषय में तव्हां कॾहिं इन्हनि जो यूज़ कयो आहे न। पोइ बाबा इन्हनि जी डेफिनेशन यादि करण जो कहिड़ो मक़सदु। हाणे ॾिसो तव्हांखे मसइलनि खे साइंस था पढ़ाइनि, साइंस में भी पढ़ाइनि था तो बाबा साइंस chemistry is a study of properties of matter, am I right? Like that. बाबा कीमियाई मादा जेके मादन जे मुताले खे केमिस्ट्री चइबो आहे, ठीक आहे। बाबा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हाणे ॿार खे कहिड़ी ख़बर त मादा कहिड़ा आहे। ॾिसो ॿार खे पढ़ाए त साइंस आहे छा। ॾिसो क्वेश्चन है ये, या ॾिसो जीअं असां सिंधी लैंग्वेज में अदाओ भली आओ या अहिड़ा जेके आहिनि, या इन्हनि सां चेंजिंग कहिड़ी थी अचे। तव्हां ॿार खे पढ़ायो त लफ़्ज़ कीअं ठहंदो आहे, जुमिलो कीअं ठहंदो आहे, खट ईअं खट आहे, फज़ूल क्वेश्चन्स हुनजो हरू तव्हां सॼो साल विञाए था छॾियो ॿार जो। ॿार खे ॾिसो तव्हां अंडरस्टैंडिंग टीचिंग उहा करायो जेका ॿार खे फ़ाइदे में हुजे। हाणे तव्हां रूल्स ग्रामर जा पढ़ाए छॾिया, बाबा तूं रूल्स पढ़ाईंदो। फॉर एग्जाम्पल तव्हां ॾिसो तव्हांखे ॾिसो पढ़ाइनि था त बाबा ट्रांज़िटिव वर्ब उहो आहे वर्ब that transfers action of subject to object, that takes an object with itself. That's called a transitive verb. Transitive verb उनखे चइबो आहे जेको पंहिंजो पाण सां ऑब्जेक्ट्स खणे। हाणे यादि त करे छॾियो पर असांखे कहिड़ी ख़बर त ऑब्जेक्ट्स आहे छा। पर जेकॾहिं असां इहा साॻियो ई क्वेश्चन कयूं था, पुछा था कयूं मोए असांखे ट्रांज़िटिव या इंट्रांज़िटिव वर्ड्स खे यूज़ करे ॾसियो त न असांखे कोन थो अचे, पर डेफिनेशन सम्झी पती आहे तो ते डेफिनेशन सां को मसलो हल न थींदो आहे न। असल में माण्हू ॾिसो मां तव्हांखे चई छॾियां बाबा हेपेटाइटिस इज़ अ काइंड ऑफ डिज़ीज़ दैट अफेक्ट्स योर लिवर, that's all. But what are the symptoms? How to cure that disease? वो डेफिनेशंस याद कराएंगे वना ट्रांसलेशंस याद करें। ॾिसो ट्रांसलेशन वॾो मज़ा असां पंहिंजी ॿोली मां ट्रांसलेट हिकिड़ी शइ करे उहा ॿी ॿोली में वञूं, जेसिताईं अचूं वञूं अधो गाह खणीजे जेसिताईं मां त मरी वेंदो। So I say start thinking about objects in English language. अंग्रेजी ॿोली में सभिनी शयुनि जे बारे में सोचणु शुरू कयो, वो पाण ई तव्हांजा मसइला हल करे छॾियो। ॾिसो हाणे रन वर्ड आहे,
ॾिसो रन वर्ड ही त बेसिक वर्ड्स आहिनि, बुनियादी वर्ड्स आहिनि, नंढड़ा वर्ड्स आहिनि। ॾिसो रन वर्ड आहे त रन जो मक़सदु आहे टू मेक अ फिजिकल क्विक फिजिकल मूवमेंट, quick physical movement made by even the people, even the animals, and even some live things. Okay, that's a physical movement that's made. Okay. For example, only if we understand only that meaning of this word, जेकॾहिं असां हीअ ई माना हिन लफ़्ज़ जी सम्झारे बाबा रन जेको आहे भॼण खे चइबो आहे, त पोइ असां इहो ई साॻियो ई कॉन्सेप्ट आहे, ॾिस साॻे ई कॉन्सेप्ट में इस्तेमालु कयो ते रन मन रन सर, ईअं सर साॻियो ई कॉन्सेप्ट आहे। हाणे तव्हां मूंखे ॿुधायो त आई एम रनिंग माय शॉप, हिते ॿुधायो भॼण जो कॉन्सेप्ट किथे आहे, माना हलाइण। man is running hard, हाणे हिते रन बरसाति भॼे त कान पई। ॾिसो ॿार जो तव्हां कॉन्सेप्ट क्लियर कयो, ॿार खे जेका बि शइ तव्हां सम्झायो था उनजो जेको कॉन्सेप्ट आहे, उनजी जेका अंडरस्टैंडिंग आहे शइ जे बारे में उहा क्लियर कयोसि। जेकॾहिं हुनजी अंडरस्टैंडिंग उन शइ जे बारे में क्लियर थी वेंदी त ॿार आसानी सां यार अंग्रेजी ॻाल्हाईंदो। अंग्रेजी तमामु सिंपल लैंग्वेज आहे, मां त चवां हिन जहिड़ी ईज़ियर लैंग्वेज का बि कान्हे का, हिन खे जेतिरो ईज़ी ही जेतिरी ईज़ी लैंग्वेज आहे न, हिन जहिड़ी ईज़ी लैंग्वेज का बि कान्हे का। पर असां वटि छा आहे जो असांजी जेका टीचिंग टेक्निक आहे उन जी फिलहाल ग़लतियूं उन में फिलहाल असांखे टीच ई नथो कयो वञे सही नमूने सां। ऐं असांखे जेको कॉन्सेप्ट आहे न टेंसिस जो, उहो कॉन्सेप्ट बि क्लियर नथो असांखे कयो वञे। बाबा ॿार खे सम्झा सही, तूं ॾिस हिकु ई लफ़्ज़ में मां तो चवां सॼो टेंस मां सम्झाए छॾींदुसि हिकु ई लफ़्ज़ में, हिकिड़े लफ़्ज़ में। जॾहिं आऊं चवां थो ग्रामर खे ऐं ॾिसो ग्रामर तव्हांखे स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड ॿुधाए थी न, उन वर्ड में सॼो टेंस आहे। हरू भरू ॿारनि खे तव्हां 15 या 30 पन्ननि ते जेको आहे सो लिखायो त बाबा ही प्रेज़ेंट सिंपल आहे, ही प्रेज़ेंट कंटिन्यूअस आहे, ही फलां ही मटीरियल यार, इहो त हरू भरू हुननि जो बि वेस्ट टाइम था कयो, न हुननि खे का शइ सम्झ में थी अचे, न तव्हांजी अंडरस्टैंडिंग क्लियर आहे जो हुनखे सम्झाए सघो। ॾिस ॿार खे शइ सम्झाइजे। तव्हांखे मां जेकॾहिं हिते लिखंदो वञा बोर्ड ते शयूं लिखंदो वञा, मुंहिंजो लिखणु ख़तम ई न थिए, ऐं तव्हांखे चवां बाबा हे कॉपी कंदा वञो, हिनखे फेयर कंदा वञो, इनजो फ़ाइदो कहिड़ो यार? हरू भरू कॉपी ते बोझ कंदो वञा। ॾिसो मां तव्हांखे जुमला पढ़ाया न, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन्स जॾहिं मां तव्हांखे पढ़ाया सवालात, ठीकु आहे। ॾिसो असांजो ज़हन जेको आहे न, अल्लाह ताला असांखे पैदा ई अहिड़े नमूने सां कयो आहे जो असांजो ज़हन जेको आहे सो तहक़ीक़ कंदो थो रहे, छो जो हुनखे शॉर्ट ई न आहे कंहिं शइ जे बारे में सटिन न आहे त बाबा हीअ शइ सही आहे या न आहे। जंहिं शइ जे बारे में असांखे यकीन दिहाई न हुजे, शक शोबात जंहिं शइ में हूंदा आहिनि उनजे बारे में असीं सवालात कंदासीं न, त जीअं असांजा शक शोबात क्लियर थी सघनि। त हाणे तव्हांखे ख़बर पइजी वई त बाबा इंटेरोगेटिव सेंटेंसिस उते इस्तेमालु कबा आहिनि जिते असांजो सोच सम्झ क्लियर न हुजे। ईअं सर बस कयो तव्हां टपाली ते बीहो था वञो, तव्हां नवां माण्हू आहियो, टपाली खां 3 रोड था निकिरनि, हिकु रोड थो वञे करम जमाली, ॿियो रोड थो वञे सरारी, टियों रोड थो वञे नवाबशाह, वञे थो न सर। हाणे जेकॾहिं तव्हां क्लियर हूंदो सवाल कंदो तव्हां त छा चवंदो, what way leads to Nawabshah? Is that question be put to the person who is there? Am I right? ये सवाल करना ना, what way leads to Nawabshah? अब नवाबशाह ने क्यों रास्ते तो बने? Are you guide me? तू मुझे रहनुमाई थोड़ी कंदे? वो बताएं ना हीरो जो पास नवाबशाह बने, are not clear. So you are asking that. For example, 3 people are sitting there, and I have a piece of work with Suhail. So I don't know that who is Suhail. I'm just clearing I have Suhail Kerwa. I'm just
Outcomes, what are your good names? What are your good names? तव्हांजा नाला छा आहिनि? तव्हां 4 ॿुधाईंदो, 3 ॿुधाईंदो, 5 ॿुधाईंदो, 10 में 4 ॿुधाईंदा. Is there Sohail Ahmed Jamali? Oh, जेको हूंदो उहो थी बीहंदो. माना आउं क्लियर न आहियां. जेकर आउं क्लियर सुञाणींदो जा त डायरेक्ट अची हुन सां राब्तो कयां. त ॾिसो, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सवाल असीं उते पुछंदा आहियूं जिते असांजी मालूमात, असांजी अंडरस्टैंडिंग, असांजी सोच का शइ जे बारे में क्लियर न हुजे. ॾिसो, तव्हां जॾहिं दुकान ते वेंदा आहियो, मां तव्हांखे हर शइ सम्झाईंदुसि. मां ॾिस सिंपल करे हीअ सभु शयूं मां तव्हांखे पूरो जुमिले जी डिटेल ॾींदुसि त जुमिले खे कहिड़ी शइ खे किथे पुट कबो, कहिड़ी जॻह कहिड़े वर्ड खे किथे रखिबो, ईअं न रुगो हवा में ख़बर मां न कंदुसि. मां जुमिला जॾहिं पढ़ाईंदुसि त उन जुमिले जी फुल तव्हांखे अंडरस्टैंडिंग ॾींदुसि त जुमिलो कीअं इस्तेमालु थींदो, जुमिले जी स्ट्रक्चर जेकॾहिं लेंदी जुमिलो थी वियो त स्ट्रक्चर कीअं कंदासीं, ऐं जुमिले जा सब्जेक्ट्स केरु थींदा, ऑब्जेक्ट्स केरु थींदा. ॾिस, अंडरस्टैंडिंग त ॿार खे हुजे. ॿार खे बिल्कुलु ख़बर हुजे त बाबा हीअ कहिड़ी शइ में असीं पढ़ूं. तव्हांखे ख़बर त हुजे. ऐं को राइटर हो न्यूज़ पेपर में लिखियो हुई त हुन चयो त I'm skeptical that the people in Asia neither know what they are being taught, nor the persons who they are teaching know what they are teaching. So, ॾिसो, हुन चयो त जेके पढ़ाइनि था उन्हनि खे ख़बर कान्हे त असीं पढ़ायूं छा था, ऐं जेके सिखनि था उन्हनि खे ख़बर कान्हे त असीं सिखूं छा था. ॾिसो, जेसिताईं तव्हां क्वेश्चन नथा कयो, it means that you are not understanding the things. If you start understanding things, then you pose the questions. जॾहिं तव्हां सिखण जी, ॾिसो मां तव्हांखे ॿियो मिसाल थो ॾियां. ॾिसो, असांजी बॉडी जिस्म जॾहिं सुन्न हूंदो आहे न, तव्हां हुनखे कहिड़ी जॻह ते धक हणो हुन ते असरु कोन थींदो. कोन थींदो न सर, थींदो कोन थींदो आहे. छो कोन थो थिए? उहो सुन्न आहे, उहो का शइ ॿुधे ई कंदो, का शइ महसूसु ई कोन थो करे. पर जेकॾहिं हुनखे जेकॾहिं सुन न थिए, तव्हां जिथे बि धक हणोसि तव्हां कंदो. त ॾिसो, स्टूडेंट्स जेके वेठा आहिनि न, उहे जेकॾहिं का शइ चलो उहे अंडरस्टैंड नथा कनि, पर क्वेश्चन त कनि. हीअ कहिड़ी शइ में असर असांखे पढ़ायो, छा पिया पढ़ायो. But another issue here in Sarari is that whenever students are encouraged to ask the questions from their teachers, and teachers reply them that they are insulted if the question is asked to them. जेकॾहिं क्वेश्चन हूंदा चवंदा असां खां पुछो था, तव्हां असांजी इंसल्ट था कयो. यार, में इंसल्ट जो कहिड़ो मसइलो आहे. जेकॾहिं असांखे को टपाली रोड ते मिले थो, उहो असांखे पुछे थो बाबा नवाब शाह रोड कहिड़ो ईंदो, असां हुनखे रोड जो ॿुधायूं था, पोइ असांजी इंसल्ट कई छा. जेकॾहिं असांखे ख़बर आहे त नवाब शाह ही रोड वेंदो, त पोइ असां ॿुधायूंसि त ही रोड नवाब शाह वेंदो. जेकॾहिं टीचर वटि स्टूडेंट्स अचे थो, ज़रूरु हुनखे का शइ नथी अचे त तव्हां त आयो आहे. जेकॾहिं तव्हांखे का शइ अचे हा सही हुजो हा, मूं छो अचो बाबा. This is the problem. क्वेश्चन त थींदो, क्वेश्चन त कबो. क्वेश्चन न कबो, ख़बर कीअं पवंदी त असां अंडरस्टैंड पिया कयूं शइ खे. ठीकु आहे सर. ॾिसो, हाणे टाइम तमामु थोरो आहे. टाइम जे करे मां जेको आहे सो तव्हांखे हींअर सिर्फ़ु जुमिलो ॿुधाईंदुसि त इम्परेटिव जुमिला उन्हनि जुमिलनि खे चवंदा आहियूं जंहिंमें तव्हां हुकुम कयो या अर्ज़ु कयो. ॾिसो, कॾहिं कॾहिं असां मां जेके अलाह ताला खोड़ सारा हिते इंसान पैदा कया आहिनि, उन्हनि में के ताक़तवर आहिनि, के कमज़ोर निहत्ता आहिनि न सर, के ताक़तवर आहिनि. हाणे ताक़तवर हमेशह छा कंदो आहे? हुकुम कंदो आहे. ताक़तवर में माना अची वियो जेके पोज़ीशन में मथे हुजनि, पैसे में मथे हुजनि, या जेके ग़रीब हुजनि, हेठियां कमु कंदड़ हुजनि, जंहिंखे तव्हां स्लेव चई सघो था, ग़ुलाम बि चई सघो था. त ॾिसो, जेके ताक़तवर आहिनि, निठिरे जेको जदो आहे, कमज़ोर आहे, उनखे हुकुम था कनि. जीअं तव्हांजो वालिद साहब आहे, तव्हांजा पोज़ीशन में मथे आहे, उहो तव्हांखे हुकुम कंदो, अर्ज़ु कोन कंदो, हुकुम कंदो न. त उहे सर उन्हनि जुमिलनि में असांजो जेको सब्जेक्ट आहे, सब्जेक्ट इन्हनि में every time is you. इन जो सब्जेक्ट कहिड़ो हूंदो आहे? यू हूंदो आहे. ऐं यू सेकेंड पर्सन प्रोनाउन आहे.
वो गैर हाज़िर हूंदो आहे, उहो एब्सेंट हूंदो आहे अहिड़े क़िस्म जे जुमलनि में। माना जेकॾहिं सब्जेक्ट गैर हाज़िर हुजे त तव्हां सम्झो इहो इम्परेटिव जुमिलो आहे। उहो हुकुम कंदा हुआ जॾहिं हुकुम या असांखे अंदाज़ ॾे, ऐं अर्ज़ कंदा हुआ जॾहिं अर्ज़ वारो अंदाज़ ॾे। अॻे मसलन जीअं मां तव्हांखे अॻु में बि चयो हुयो त स्टॉप द बाइक, स्टॉप द बाइक। जेकॾहिं ॾिसो असां रोड में असां अचूं पिया त असांखे को हथु थो ॾिए, असांजो जेको सॻो आहे ताक़तवर आहे पुलिस वारो या हथु ॾिए बाबा गाॾी रोक, इहे चवंदा आहिनि सर, त असां छा कंदासीं? त असां कमज़ोर आहियूं, रोकींदासीं। माना हुकुम आहे न, हुकुम थो करे न, ऑर्डर आहे। या ॾिसो क्लोज़ द डोर, दरवाज़ो बंदि कर। हुकुम खे चवंदा आहियूं नौकर खे सर, नौकर खे चवंदा आहियूं जेको माना असांखे पघार ते रखियलु हूंदो आहे, ईअं सर। Move the trouble. Many more sentences like that. It means that I'm asking somebody for doing that work, but still the subject isn't clear, and you understand that the person I'm talking, I'm asking that person. जंहिं माण्हू सां ॻाल्हाए पियो हुकुम त उन खे ई थो कयां न, ऐं ॻाल्हाईंदे त जेको जंहिंसां ॻाल्हाए वञे उहो केरु हूंदो आहे? सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हूंदो आहे, यू हूंदो आहे हर टाइम। बाबा जंहिंसां कलाम कयो वञे उहो कहिड़ो प्रोनाउन हूंदो? यू हूंदो, जंहिंसां कलाम कयो वञे। ॾिस मां हिते ज़रूरु तव्हांखे चवंदुसि न, दरवाज़ो बंदि कर, पाणी खणी अच, चांहि छा। These are the common sentences. Have tea. Have tea. चांहि छा। Move the table में बचा। Move the table माने क्यों? कुर्सी खणी अच, टेबल के मूव कर, पर कर टेबल के। ये चवंदा आहियूं सर, सिंपल जुमला आहिनि जेके ॾिसो लैंग्वेज इहा ई आहे, इते ई आहे ॻाल्हाइण, इते ई आहे ॻाल्हाइण, को मथां कोन थो वेही अचे। ॾिसो असल में असांखे सही नमूने सां सम्झायो कोन थो वञे। जेकॾहिं सम्झायो वञे न, ऐं जेतिरी मुंहिंजी अंडरस्टैंडिंग आहे लैंग्वेज जे बारे में, ऐं चवां त तमामु ईज़ियर में ईज़ियर लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज आहे ॻाल्हाइण, तमामु ईज़ी। सिंधी ॾुखी आहे, सिंधी ॾुखी आहे, मूंखे हाणे मसला कंदी आहे, मूंसां ॻाल्हाइण में मसला कंदी आहे सिंधी लैंग्वेज, पर हीअ मूंखे सवलो लॻंदी आहे। सवलो इन करे थी लॻे जो माण्हू सम्झा त हीअ तमामु ईज़ी लैंग्वेज आहे। ॾिसो ॾिसो हिन सभिनी में हुकुम थो करे। हाणे ॾिसो वरी तव्हां जंहिंखां जदा हूंदो, जंहिंखां तव्हां जदा हूंदो, जंहिंजे अॻियां तव्हां झुकंदो पिया हूंदो, त उनखे चवंदो, उन्हनि खे सभु तव्हां छा चवंदो? पार्डन मी, पार्डन मी, मूंखे माफ़ कर। माफ़ त उन्हनि जो कराइबो न जेको ग़रीब हूंदो उहो ई कराईंदो न माफ़। हाँ clear the last. Like that, many more examples like that you can take. Okay, yeah. So I'm giving these examples. I'm showing here that and these type of sentences, subject is understood and subject is always the same. One, you, second person pronoun is there, and that's it from these sentences. And the structure of these sentences is that verb and objects, verb and objects, and sometimes the complement. So like that, these type of sentences can be made. And the fourth form of idea that we express whenever we are going to talk a language, because when we map our language deeper and deeper, so we map the use of four type of ideas there. And exclamatory जुमलों के जमाने में ऐसी ताजुब को बयान करें, क्या के बयान करें? ताजुब के बयान करें। जी ॾिसो, वाह, ओए हाँ,
got success. Got successful. Got successful. Oh, awesome. कामयाब थी. We have won the match. And such type of sentences are there. And then another sentence. So in the tajruba, असां के कामयाब कोन थियूं आहे, कामयाब थियण जी का चांस ई नहीं. टीम सफ़ा हारियो वेठी, असां के पास करण जी इम्तिहान जी का चांस ही नहीं. पर जेका इम्तिहान खटे वियासीं, इम्तिहान पास करे वियासीं, त असां चवंदा oh that's a great, like that. So what a beautiful person, a beautiful girl, beautiful chokri का इस्तेमाल थी हुआ. ठीक है सर? You are. What a beautiful girl you are. For example, here we mean that we are appreciating the beauty of a girl, that the beauty, girl has much more beauty than we think. Whenever all of a sudden you see a beautiful girl, you say she has more beauty than we expect. You say what a beautiful girl she is. So it means that she is very beautiful girl. An assertive sentence, if we change from that to an assertive sentence, we will call that a beautiful girl. You are a very beautiful girl. Like that. Oh, what a clever boy you are. So you are a very clever boy. So when we develop to learn further about the sentences, we learn that how to change a sentence from one form to another. That's the beauty. जॾहिं ॾिसो असां अॻिते हलंदासीं, अॻिते सिखणु शुरू कंदासीं त असां वरी जुमलनि खे कन्वर्ट कंदासीं हिकिड़े फॉर्म खां ॿिए फॉर्म में. ॾिसो न, लैंग्वेज असांखे जॾहिं सम्झ में अची वेंदी त असांखे सभु शयूं ऐं रिमेंबर करण जी का ज़रूरत कान्हे का. यादि करण जी ॾिसो ही इम्परेटिव जुमला आहिनि, ही सारी एक्सक्लेमेटरी जुमला. ठीकु आहे सर? लिखोसि भले, लिखोसि साहब, लिखोसि भले. हाणे मां तव्हांखे सम्झाईंदुसि जुमले खे पूरो करणु. ठीकु आहे सर? जुमलो खे ॾिसो, the words and our thoughts to make it understandable. How to put our words at the right place to make our thoughts understandable, make our ideas understandable to other people. You know, because the basic purpose of our communication is that we make other people able to understand what we want to say, what we are saying. जेको बि असां चऊं पिया उहो ॿियनि खे अंडरस्टैंड थिए, सम्झ में अचे. जेसिताईं सम्झ में नथो अचे त असांखे ॻाल्हाइण जो भले आउं फास्ट ॻाल्हायूं, केतिरो बि ॻाल्हायूं, पर उन जो फ़ाइदो बि न. बिकॉज़ ॾिसो कॾहिं कॾहिं असीं जुमले खे ॾिसो सब्जेक्ट छा हूंदो आहे, हू, केरु, कहनि. ॾिसो ईअं सिंधी लैंग्वेज खे तव्हां थोरो सम्झो त उन जे लाइ असां ॾींदा आहियूं छा कयूं. ये जो ना है ना, इससे ताकि मुख्तलिफ नमूनन सां मां अंग्रेजी सिखाई वेंदो. what, कह कयो, छा कयो, कह छा, ठीक है. I hope कैसा कहे. okay. Now, where, when, okay, why, how, okay, like these things. That means that who means कह कयो, के जगह तव्हां सब्जेक्ट चल रहा है. what माना वर्ब, फाइदा, ऐं होम माना ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. वेयर कॾहिं कॾहिं वेयर खे असीं जेको आहे सो इस्तेमालु कंदा आहियूं त मतिलबु कि असीं कम्प्लीमेंट करणु पिया चाहियूं. एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम. ठीक है, ये सब यूज़ कंदा आहियूं जुमले में असीं. कॾहिं ऐं ही जेको आहे सो इस्तेमालु कंदा आहियूं. कॾहिं कॾहिं त असीं इनखे जेको आहे सो असीं कंजक्शन जे तौर ते इस्तेमालु कंदा आहियूं. कॾहिं कॾहिं प्रेपोजिशन बि इस्तेमालु कंदा आहियूं. वाए छा लाइ,
ठीक है कंजक्शन and how means छाजे करे किया so you know that objects figure of place so इला स्ट्रक्चर होनी सॼे जुमले जी मतलब कि ॾिसो she beats me she cheats me she teaches me at her home at 7:30 p.m. because she doesn't okay yes she subjects who के थी से कारी छोकरी आवाज हुआ कहाँ से कारो होना ठीक है this was subject now what छाती से कारे कुछ सिखा रही थी पढ़ाई छाती करे सिखा रही थी छाती करे सिखा रही थी क्या कहती सिखा रहे हो वो कहती सिखा रहे ये सभी ग्रामर में एक जुमले में माने दूसरे एक जुमले में सभी ग्रामर के ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है एक जुमले में नहीं आता नाउ कितने दिन सिखा रहे पहले घर में because she doesn't have a time so she teaches at her home yeah now एक मंथ सिखा रहे 7:30 बजे रात हो छाजे करे थी सिखा रहे why that's question that's the reason because she doesn't have time free time doesn't have a free time चलो ना मानो वक्त कौन था for example if you are learning something from Sir Atyari so he doesn't have time to come here to attend the coaching center here so he asks you to come at his better at mass where he teach you about the things that you are learning okay so this is assignment take the time it na hai te chalo he chapno board sikha rahe ho ठीक है सर so I'm giving the examples that don't make that type of structure when you are making a sentence जेकर ता जुमलों को उठाएगा जुमले के एरी स्ट्रक्चर ठीक है वो भी जुमलों ता उठाएगा many more sentences like that we can make एला या बहुत सारा सी जुमला उठाए सकूंगा easier चाहिए सो आज संगा हो चुके कॉमन जुमला पूरा दिया सो मान लीजिए that जुमले थे सो after tomorrow we are work on the structure of sentence I'll show you many ways of making a sentence setting the words in our sentence that where to put these words in our sentences kada kada so asana in thigwa yes